Okay, so in this lecture, we will talking about the total probability theorem as well as Bayes theorem. Okay, so first of all, I will explain this theorem by using an example, and after that, I will write the statement as well as proof of that theorem. So suppose that we have four boxes. In first box, two white and three black ball. In next one, the four white, seven black ball. And third box, four white, two black, six white, and five black. Okay. And our question is, suppose that you are selected one ball from whole boxes. Then what is the probability of that? Should be white ball. So if you want to total white ball, probability of total white ball, so this total white ball is known as total probability theorem. So how to find this total probability of white ball? So here there are four boxes. In each boxes, some white and some black. Suppose that we're talking about only first box and choose white ball. So what is the probability of white ball box 1? Suppose that the name of box 1 is B1, name of box 2 is B2, this is box 3, and this is box 4. So my question is, what is the probability of white ball from box 1? So that means the mathematically we can represent white upon B1. That is nothing but conditional probability. Because in this question there are two events. Our question is what is the probability of white ball from box 1. So our target is what is the probability of white ball, but that white ball came from box 1. So that means this is your conditional probability. In this question there are two events. Here box 1 is given. I mean, first of all you choose the box 1 and then find the white ball from box 1. So in this case there are two events, and first white ball, that is your question, what is the probability of white ball, but that white ball came from box 1. So box 1 is the event 2, so this is the conditional probability. So mathematically representation of this sentence is white ball upon B1. Understood this line? Yes, sir. Okay, suppose now next one, what is the probability of once again white ball, but that is from box 2. So what is the mathematical representation of this one? Can you able to tell me? Yes, white from B2. Now next one,
what is the probability of white ball from box 3? So mathematical representation of this sentence is W upon B2. And last one, Sir, what is the B3, probability sir. of, B3. sorry? Sir, B3. Yes, B3. And this is B4. So what is the answer of individual data? So in Sir, box for 1, this is your box 1, right? So total number of balls is what? 5, and in which 2 balls are white. Your answer is 2 by 5. Similarly, what is the answer of second part? sir, 5 upon 12. 5 by 12. 12. Then 6 upon, not 6, 4 upon 6. 4 upon 6. And last one is 6 upon 6 11. upon 11. Right? But this white ball, first one came from B1, second white ball came from B2, third white ball came from B3, and fourth white ball came from B4. So what is the total white ball? Probability of total white ball. Yani, I mean question is what? What is the probability of white ball? P of W. This is total. So common sense, हम सब लोग सबको ऐड कर लेंगे. Right now, total is nothing but addition of all the probability of white ball from box 1 as well as box 2 as well as box 3 and box 4. But before adding, first of all, you select the box. आप किसको ऐड करने जा रहे हैं? फर्स्ट बॉक्स के अंदर के जो व्हाइट बॉल है अगर उसको ऐड करने जा रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव चूज द बॉक्स 1 and then write the probability of white from box 1. Understood this sentence? आपके पास टोटल 4 बॉक्सेस है, तो 4 बॉक्सेस में से आपको व्हाइट बॉल चूज करना है. बट व्हाइट बॉल चूज करने से पहले आपको पहले बॉक्स चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास 4 बॉक्सेस है. तो आप, मैंने अगर बोला कि आप व्हाइट बॉल उसमें से चूज करो, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कौन से बॉक्स में जाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज बॉक्स एंड देन चूज व्हाइट ball from that box. This is the meaning of this one. Plus, either you can choose second box and then white ball from the second box. So, can you able to tell me here what will you write? Probability of B2. Like that. Understood? Now, our question is, what is the probability of box 1? Right? So, there are total 4 boxes. Number of boxes is 4. Number of boxes is 4. And if you want to write the probability of box 1, then 1 upon 4. Similarly, if you want to write the box 2, probability of box 2, then once again 1 by 4, and for 3 and 4 as well as 1 by 4. Is it clear? Because there are 4 boxes. So finally 1 by 4 and 2 by 5 plus once again 1 by 4, and in second box, what is the probability of second white ball from second box? That is 5 by 12. 5 by 12 here. Right? Once again 1 by 4, and answer of this one is 4 by 6, and last one 1 by 4, that is 5 by 11. Right? Once again we'll check, is it right or not? 6 by 11, sorry. Okay, so that is 6 by 11. Understood this question? Calculation doesn't important. Concentrate on the concept behind that. So any doubt in this question?
Students, any doubt? No, sir. Okay. No, sir. So first of all, your target is what? First of all, you have to choose the box and find the element from that box, right? So in general, suppose that there are, in general, suppose that there are n number of boxes. There are n number of boxes. This is box 1. This is box 2, box 3, like that. Suppose that this is the last box, AN. And in every box, present some white ball or black ball. Suppose that your target is find the probability of black ball from each one. So this is your, this circle represent to B, right? So our target is find the probability of B. I mean this portion, as well as this portion, as well as this portion. So the first portion, that is a A1 intersection B, because this circle represent a B, and this is your box A1. The intersection between that part is like this one. Plus is nothing but union, but in terms of probability you can write plus, or first of all you write in the terms of set and then you convert into probability. Okay, the second portion is A2 intersection B union A3 intersection B dot union AN intersection B. So this is your total set of B. If you write in terms of probability, so already you know if A union B is nothing but P of A plus P of B. That's it. If A and B are disjoint. So here you can see that the no common element between this portion, ये जो मैंने रेड कलर का हाईलाइट किया है, एंड उसके साइड में दूसरा जो है, यहाँ पर मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ. इन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. इसका मतलब ये रेड वाला और ग्रीन वाला बोथ आर डिसजॉइंट. सो डिसजॉइंट के केस में सिर्फ एडिशन कर लेंगे डायरेक्टली. यूनियन कन्वर्ट इनटू एडिशन साइन. This is the axioms of probability. So if you want to write in terms of probability, then probability of B is nothing but probability of A1 intersection B plus probability of A2 intersection B plus dot AN intersection B. After that, write the formula of conditional probability. Conditional probability of B upon A1. This is nothing but A1 intersection B upon P of A1. Now cross multiply to this one. So finally we will write B upon A1 into P of A1. This is nothing but probability of A1 intersection B. That means you have to write here A1 intersection B in place of probability of A1 intersection B, we can write this term. Understood? This is the formula of conditional probability. So according to formula of conditional probability, we can write P of A1 intersection B is nothing but P of A1 as well as P of B by A1. So in next line, after this one, you can write P of B equal to P of A1 probability of B upon A1. This is for first part. इस part के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज लिखा है. For second part, plus in similar way we can write P of A2 plus P of B by A2. For third one, dot P of
A3 upon P of B upon A3. Right? Matlab, first of all, you have to write the probability of box, and after that, choose B from A1. This is the probability of box 1, and this is the probability of B from A1. Similarly, probability of box 2 and B from A2, like that. जैसे कि मैंने पहले आपको 4 बॉक्सेस का एग्जांपल दिया, उसी को इन जनरल बोल दिया. सो ये जो लास्ट में आंसर मिला है, दिस सेंटेंस इज नोन एज, दिस फॉर्मूला इज नोन एज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यानी कि P of B is nothing but total probability. So this formula P of B summation P of AI into P of B upon AI. I start from box 1 to number of box n, and this sentence is known as total probability theorem. Understood? Any doubt in this sentence? जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा, यहाँ जो व्हाइट बॉल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो पूरा फॉर्मूला मैंने लिखा है ना व्हाइट बॉल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फॉर्मूला है, this formula is known as total probability theorem. First of all, choose the box and find the white from box 1, then box 2, white from box 2, like that. तो यहाँ मैंने 4 boxes के लिखा, यही फॉर्मूला आगे मैंने n number of boxes के लिए लिखा, so that in general लिखा जा सके. So this is known as total probability theorem. उसका प्रूफ मैंने यहाँ नीचे लिख के दिया, proof of total probability theorem. Is it clear? So इसी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने फर्स्ट पहले इस क्वेश्चन में टोटल व्हाइट बॉल कैलकुलेट किया, तो यहाँ जो भी आंसर मिलेगा, वॉट एवर, अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, बट ये जो भी आंसर मिलेगा ये वो टोटल व्हाइट बॉल मिल गया. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कि टोटल व्हाइट बॉल में अभी इस व्हाइट बॉल के अंदर बॉक्स 1 के भी कुछ बॉल्स आए हैं व्हाइट वाले, बॉक्स 2 वाले भी आए हैं, एंड बॉक्स 3 वाले भी आए, राइट, इवन बॉक्स 4 वाले भी है. मतलब एवरी बॉक्स से मैंने यहाँ पे व्हाइट बॉल का कलेक्शन कर लिया. मेरा क्वेश्चन है कि टोटल कलेक्ट होने के बाद उसमें B3 से कितने आए हुए, ये फाइंड आउट करना. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 फ्रॉम व्हाइट, आई मीन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल दैट केम फ्रॉम B3 से आए हुए कितने व्हाइट बॉल हैं, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो दिस सेंटेंस इज नोन एज, दिस mathematical representation is known as Bayes theorem. So if you want to find B from AI, this is called as Bayes theorem. Probability of B given that it came from box AI. Mathematically you can write P of AI upon B. This is your target. So just use the conditional probability wala formula. So that is A1 intersection B divided by P of B. And formula of this one already here I will write, that is P of AI into P of B upon AI divided by P of B. And what is the value of P of B? Already I have proved here. So finally answer is A of P of AI, P of B upon AI whole divided by summation of P of AI into P of B upon AI. I start from 1 to n. So this whole formula is known as Bayes theorem. So let's understand this formula by using some example so that you can understand properly, right?
Okay, so this is your first question related to. वीडियो टीचर नहीं लाया वीडियो नहीं लाया So this is your first question related to Bayes theorem. So in this question there are two boxes. So first of all, you make a box. Sorry, make a two box together. In this is your box one, and suppose that the name of box A1 is A1, and this is A2, that is box 2. In first box there are five white and 6 black. In second box, that is 6 white and 5 black. Now your first question, what is the probability that the ball chosen will be white? I mean, your first question is probability of white ball. So according to your first part, first of all write the formula, probability of white ball. So first of all you have to choose the box 1 and select white ball from box 1. Understood? In same way you can write, first of all you have to choose box 2 and write probability of white from box 2. Any doubt? Students, any doubt in this sentence? In this formula? No, sir. Okay. sir. So there No, are two sir. box. There are two box. So probability of box 1, that is 1 by 2, and probability of box 2, that is once again 1 by 2. So that is 1 by 2 and white from A1. So there are 5 white and total white number of balls in box 1, that is 11, plus once again 1 by 2, this is the probability of second box 2, and 6 upon 11. So finally you can simplify this expression and then we will get the final answer. So 1 by 22 is a common, therefore 5 plus 6, that is 11 by 22. Finally answer is 1 by 2. Now second part. Yes, just read the second part. Given that the ball chosen white, right? This is given. So in conditional probability, already you know the given event always write in denominator, right? What is the probability of A when B is given? That means A by B. The given event always write in denominator, right? So here given that the ball is white, so that is a given event. That's why you should write white in denominator. And what is the probability that came from box 1? And name of box 1 is A1. So this is known as Bayes theorem. So according to Bayes theorem, you will write formula P of A1, P of white from A1 whole divided by P of white. And what is the value of white ball probability? That is 1 by 2. Already you have solved in the first part. And the probability of box A1 is 1 by 2. And white from A1, this is A1, not AI. White from A1, there is a 5 by 6. 11, sorry. So finally, your answer is 5 by 11. So any doubt in this formula? Students, any doubt? Then ask. सर ये सेकंड वाला बताइए ना एक बार हाँ सेकंड वाला एक बार वापस बता दो. According to definition of conditional probability, what is the probability of event A when B is given? Right? So what is the meaning, mathematical meaning of that? That is A by B. Is it clear? Okay, so once again I repeat. So tell me, what is the probability of A when B is given? What is the mathematical representation of that? Yes, what is the probability of A when B is given? What is the mathematical representation? Yes, student, tell me.
probability of A if B is given. So what is the mathematical representation? P of what? A upon B. A upon. So in this question, what is the given event? Given that the ball chosen is white. So that is given. Suppose that the event name is W. And what is the probability of box came from box 1? That is the A1. So what is the mathematical representation of this line? P of what? देखो जो गिवन रहता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, इतना क्लियर हुआ। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, ये भी यहाँ पे क्लियर हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ पे जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो बॉक्स A1 है, तो उसको कहाँ लिखेंगे और जो गिवन है उसको कहाँ लिखेंगे? A1 upon W. A1 अपॉन। यहाँ तक क्लियर हुआ इस सेंटेंस को रीड करके? Yes, यस। sir. Yes, तो sir. अगर ये समझ में आ गया कि A1 अपॉन W निकालना है, तो अब हम लोगों ने ऊपर बेस थ्योरम लिखा हुआ है, उस बेस थ्योरम को वहां से नोट डाउन कर लेते हैं। बेस थ्योरम में यहाँ दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला है जो आपको मेमोराइज करना है। सो इसका ये आंसर है, जो फाइनल आंसर है वो याद रखो, आप इसको ही मेमोराइज करो, ये वाला पार्ट मेमोराइज करो। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पोर्शन आपको याद रखना है। दिस इज इक्वल टू दिस, ये आपको याद रखना है। बाकी ये कैसे आया वो मैंने प्रूफ करके दिखाया, बट प्रूफ आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सीधा आपको स्टेटमेंट याद। तो ए बाई बी का आपने आंसर यहाँ क्या लिखा? बी नीचे है तो अभी भी डिनोमिनेटर में बी लिखा हुआ है, और ऊपर आपने पी ऑफ A1 पी ऑफ बी बाई A1 लिखा। तो आपको यही चीज याद रखना है, और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, सिर्फ बी को डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज हमारे क्वेश्चंस के अंदर जो नोटेशन है वो बी ना बोल के डब्ल्यू है, तो मैंने यहाँ पे डब्ल्यू रिप्लेस कर दिया। जहां जहां बी लिखा था यहाँ बी लिखा था, बी लिखा डब्ल्यू लिख दिया। अभी कंफर्टेबल है आप लोग? Yes, sir. बाकी हमने Yes, उसके sir. वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और 1/2 कैंसिल हो गए, आंसर आ गए। हाँ, यस, एनी डाउट? ओके, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। Yes, so read this question properly. Now question number 2. So we have 4 boxes. So first of all, make 4 boxes. I mean, make a 4 partition of a complete box. In first box, the number of component is 200, 2000, and 5% is defective. Okay. In second box, 500 component and 40% are defective. In box 3 and 4, 1000 component and defective is 10% in both. Right? So what is your first part? Yes, what is the probability that selected component is defective? The probability of defective component you have to calculate. I mean P of D. Is it clear? So what is your next step? First of all, you have to choose box 1. Suppose that the name of box 1 is A1. So box A1, and write the defective component from box A1 plus
टेल मी द नेक्स्ट वन, आगे क्या लिखना है स्टूडेंट्स? Sir, A2 probability A2 Probability of A2, probability of box defective A2 piece upon A2. and defective D upon component A2. from defective A2. D upon A2. Yes, now probability of box A3 Yes, and probability of defective component from A3 and probability of box A4 and defective component from A4. Understood? yes, sir. Yes, sir. So what is the defective component in A1? 5%. Right? Yes, sir. Yes. Yes, But sir. you have to write in terms of probability. So 5% को अगर आप probability में convert करेंगे, then 5/100. This is nothing but defective component from box A1. Understood? So similarly, you have write 40% and 40/100, 10/100, 10/100. But what about the probability of box A1? Here you can't write probability of box A1 is 1/4, 1/4, 1/4 like that, because here the number of components is given in box 1. So if you want to find the probability of box A1, so you have to add all component. So that is n of s. So number of component in all boxes, that is 200, 2000, 500, 1000 plus 1000. So how many components? That is 4500. 4,000. So now if you want to write the number of component in box A1, right? Number of component, because this is not box. आपको component की probability calculate करना. So first of all, you have to write the number of component in box A1, and then what is the probability of defective component from box A1. So P of A1 is basically not a probability of box. This is the probability of component in box A1. अगर ये सिर्फ probability of box रहता, then you have to write 1/4, 1/4, 1/4. But here you want to find the probability of defective items. So first of all, you have to choose component from box A1 and then write the probability of defective component from box A1. So here P of A1 is not a probability of box. This is the probability of probability of component in box A1. Understood? The difference between previous question and in this question. Is it clear? दोनों क्वेश्चन के बीच का Yes, डिफरेंस sir. समझ में आया? पहले में हम लोग सिर्फ बॉक्स की प्रोबेबिलिटी लिख रहे थे. नाउ इधर हम लोग बॉक्स की प्रोबेबिलिटी नहीं लिख रहे हैं, इधर बॉक्स के अंदर जो कंपोनेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर बॉक्स का प्रोबेबिलिटी लिख रहे होते देन आंसर इज 1/4, 1/4, 1/4 बिकॉज देयर आर 4 बॉक्सेस. बट आवर टारगेट इज फाइंड द डिफेक्टिव कंपोनेंट. Then you should write the probability of each component of every boxes. So this P of A1 is nothing but, मैं इसको चाहिए तो डिटेल में लिख देता हूं. P of A1 is nothing but probability of component. सर Yes, tell me. सर मेरी फ्रेंड नेटवर्क इशू की वजह से लीव हो गई थी, उसको वो वेटिंग पे, उसको अंदर सर ने ले. मुझे So this is nothing but probability of component from box A1, not a probability of box. P of A1, not a probability of box. But in previous sum, P of A1 represent a probability of box. Is it clear? So इसके लिए यहाँ पे अगर ये सिर्फ probability of box रहता था तो आंसर 1/4 लिखते. बट ये probability of box नहीं है. बॉक्स के अंदर जो कंपोनेंट है उसकी हम लोग probability कैलकुलेट कर रहे हैं. So in that situation,
you have to write number of component present in box 1 divided by total component. So how many components are there in first box? 2000 divided by 4500. Yes, 2000 divided by 4500. Similarly, P of A2, then probability of components from box 2. Is it clear? Then answer is what? 500 upon 4500. Then probability of A3, probability of component from box B3. Answer is 1000 upon 4500. And P of A4, that is box 4. Answer is 1000 upon 4500. So any doubt in all probability A1, A2, A3? Students, any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. So let's put all the values in the above formula and calculate total defective components from all boxes, right? So already मैंने formula लिख के रखा है, आपको सिर्फ उसके अंदर value substitute करना है. And P of D by A1 is what? D by मतलब defective component from A1 box. What is the meaning of D by A1? So probability of D by A1 is nothing but defective component from box A1. And what is the meaning of P of D by A2? Yes, tell me. P of D by A2 is what? Defective piece from A2. Yes, defective components from box A2. So what is the value of that? Also tell me the value of D by A2. Yes, student. Here P of D by A1 is nothing but 5%. Na? Yes, sir. Similarly, what is the value of P of D by A2? 200 by 50. 200 by 500. 500. 200 by 500. Why here I am writing the 5%? ये 5% कहाँ से आया? 40 upon 100. नहीं, can you able to tell me मैंने इधर 5% का 5% कहाँ से लिखा है? ये इधर से लिखा है ना हमने? और ये 5% को क्या बोल रहा हूँ मैं? This is the defective component from A1. Effective. Yes, sir. So my question is, because इसके पहले दो स्टूडेंट ने आंसर दिया, दोनों आंसर रॉन्ग है, इसके लिए मैं वापस रिकॉल किया. So मेरा क्वेश्चन है कि what is the defective component from A2? 40%. 40%. 40 by 100. 40%, or you can say 40 by 100. And what is the defective component from box A3? 10%. 10%. And defective component from A4, that is also 10%. 10%. Yes. तो मुझे P of D by A1 की जगह क्या लिखना है? 5%. 5%. P of D by A2 की जगह क्या लिखना है? 40%. P of D by A3 की जगह क्या लिखना है? इसकी जगह क्या लिखना है? 10%. इसकी जगह क्या लिखना है? 10%. This is 10%. This is also 10%. And this value is 5%. And this is nothing but 40%. But 40% को आप fraction में convert करेंगे. So that is called as a probability. So here I will put P of defective. तो पहले बॉक्स में 5% है. पहले तो आप बॉक्स 1 में कितने कंपोनेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. P of A1 1 by 2. No, this is wrong answer. Because मैंने ये नहीं पूछा कि what is the probability of box A1. If तो भी गलत होता आपका आंसर. Because 1 by 2 तो वैसे भी नहीं होगा. अगर आपका 1500. इधर लिखा है ना P of A1 is 2000 by 4 by 9. no need to calculate. Just tell me whatever written here, right? ना जो लिखा है वही बोलना है. Okay. Okay. And what is the defective from box A1? 5%. 5%. 5. And what is the defect probability of defect component from box A2?
500 upon 450. 5,500. 4,500, and that is 40%. Is it clear? Okay, so in next line, that is 10%, right now? Yes, sir. And the number of component present in box 4, that is 1,000 out of 4,500, and defective component from that, that is 10%. So understood this total line Yes, in sir. this step? Okay. Yes, Now we sir. have to simplify this one. So simplification में कुछ ज़्यादा problem नहीं होएगा, because denominator completely same है throughout. Then you can write 4,500 into 100. All denominator में यही लिखा है. And आप चाहिए तो इसमें से ये 100 वाला कैंसिल भी कर सकते हो, तो बेटर रहेगा. ये 100 वाला हर एक में कैंसिल हो जाएगा. तो 20 0000 कैंसिल होगा हर एक में. तो 20 by 100 that is 100. Sorry 5. 20 into 5 that is 100. इसमें 00 कैंसिल हो गया, तो 40 into 5 I think so that is 200, right? And इधर 100 आएगा और लास्ट में भी 100 आएगा. So finally 500 ना, 500 divided by 4,500. So this is your first part. Let's see an second part. Yes, read your second part of this question. Once again, knowing that means given, right? So given that selected component is defective, determine the probability that came from box 2. So what is the mathematical representation of this sentence? This is equal to what? जैसे फर्स्ट वाले का था P of D जो हमने कैलकुलेट किया. सेकंड वाले को क्या लिखें? Given that always write in denominator, right? And what is the probability that come from box 2? That is right in numerator. Box 2 को हमने A2 नाम दिया है and defective को D नाम दिया है. तो mathematical representation tell me. A2 upon D. A2 upon D. Yes. So this is your second part का notation. So right here second part B, P of A2 upon D. Now apply Bayes theorem. So what is the formula? P of A2 into P of D upon A2, right? The whole divided by P of D. This is your Bayes theorem. Here मैं लिख देता हूँ. AI upon B is nothing but P of AI into P of B upon AI divided by P of B. देखो B नीचे लिखा है इसलिए यहाँ नीचे B आएगा और ऊपर का सिर्फ आपको मेमोराइज करना है. तो I की जगह मैंने 2 लिखा है. इसमें कहीं कोई डाउट है? इट इज बेस थ्योरम. जो आपको मेमोराइज ही करना है बेसिकली. प्रूफ मैंने ऑलरेडी आपको बताया. सो A2 what is the component A present in A2? That is 500, right? 4,500. And defective component from A2, that is 40%. Is it clear? P of D already मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. That is 500 divided by 4,500. Now here 500 का 00 और ये 00 कैंसिल होगा. सो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 200, राइट? एंड डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 500. बिकॉज ये 4,500, तो वो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा ना. 500 upon 4,500. 4,500 कैंसिल हो गया. 500 से 100 का 00 कैंसिल हो गया. तो ऊपर 5 into 40 that is 200 और नीचे ये 500 जो बचा है वो मैंने लिख लिया उधर. सो फाइनली आंसर 2/5.
अंडरस्टूड? इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज 1/9. ओके, कैलकुलेशन डजंट इम्पोर्टेंट, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. Important is what? Concept. So any doubt in concept of part A as well as part B? Part A is known as total probability and part A is nothing but Bayes theorem. So in part A, part B, any doubt? Okay, so let's start the third problem. Yes, student, any answer? Please give me some answer. पहले में कुछ डाउट है या नहीं है, No, उसके लिए कुछ sir. आंसर करो. अगला सम्स बताऊं कि नहीं बताऊं, उसके लिए भी आंसर करो. क्या करना है, अगला सिखाओ. Yes, Yes. sir. Okay. Yes, sir. चलो, let's start. So there are 4 machines. तो अभी तक हम लोग उसको बॉक्स बोल के ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग बॉक्स ही बोल देते हैं, बट एक्चुअली वो बॉक्स नहीं है, मशीन है. सो देयर आर 4 मशीन्स. द नेम ऑफ machines is nothing but A1, A2, A3, A4 as well as the first machine A1, machine A2, A3, A4. The 10%, 20%, 30%, 40% of item respect. So machine A1, A2, A3, A4 produce 10%, 20% like that. Yani machine A1 produce 10% item. 10% already given in the percentage. That's why you don't need to calculate probability, because this is already probability. The component, produce component from box A1, machine A1. This is nothing but 10% already given. Yani ki this one. Similarly, item component या फिर whatever component produced from A2 box, A2 machine is what? That is 20%. Percent is nothing but probability. Just write divide by 100. A3, probability of produce component from A3. What is the answer? 30%. Understood? A4 means what? Probability of produce component from machine A4. This is P of A4. What is the value? 40%. Is it clear? Yes, sir. Okay, Yes, just sir. write in box also. That is 20%. That is 30% and 40%. Now, the percentage of defective item produced by the machine A1, the 5%. This is defective. That is 4%. This is 3% and 2%. तो ये 5% को मैथमेटिकली कैसे लिखें? P of what? Sentence wise 5% क्या है? 5% is what? Percentage of defective item Defective. from D upon A1. D upon A1. Yes. D upon A1. A1. इन सेंटेंस इसको रीड कर सकते हो. P of D by A1 means what? इसको सेंटेंस में क्या रीड करेंगे? Probability of machine A1 defective component or items from A1. machine A1. Yes, इसको रीड करो जरा. D by A2 is what? Read any student. Yes, I am waiting from your side. Probability of defective component from machine A2. A2. Okay, just a minute. Just wait.
Okay, so can you read this? P of D by A2 is what? Any student? Yes, any. Yes, please. Probability of defective components from machine A2. Very good. So now next one, D by A3. This is nothing but defective components from machine A3. And Machine here I A3. will write, एक मिनट इधर ही लिख देता हूँ. A, just wait. This is D by A3 and this is D by A4. Okay, now tell me the value also. So defective component from machine A1 is what? 5%. 5%. Very good. 5%, For sir. 5% के लिए हम लोग लिखेंगे 5 by 100. And defective component from box A2 is 4%, 4 by 100. 4%. A3 that is 3%, 3 by 100, and 2% any 2 by 100. Is it clear? Any doubt? Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. So let's read first question. नहीं, इसमें एक ही question पूछे. An item selected random is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine A4? So what is the mathematical representation of last line? What is the probability that it was came from machine A2? Given that क्या दिया है? An item selected is random is to found defective. ये ओवरऑल लाइन का मीनिंग क्या है? कोई बता सकता है आप में से? P of what? क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 upon 3. Yes, any other student? P और of कोई बता सकता? A2. Sorry? P of Once again. A2. P of A2. No, this is wrong. Any other student? The selected item is to find to be defective. यानी given, this is a given event. Defective होना ये given है. And जो पूछा है वो A2 है. Yes, any other student? P of A2 upon. Yes, very good. P of A2 upon D. And it is base theorem. So tell me formula also. What is the formula of this question? I mean base theorem बोलो आप. Yes, reply any one student. P of A2. Yes, very good. P of D upon A2 A2 divide by 2 AP upon P of D. P of D. Okay, good. And P of D is the total probability, right? So what is the formula of P of D? वो भी कोई तो बताओ. P of D का formula? What is the probability of defective item? Yes, any student can able to tell me? Probability of A1 into probability of D defective upon A1. एक मिनट. Probability of A1, probability of D upon A1. Very good. Yes, probability of A2 Yes, probability of A2. multiplied by probability of defective basis A2 A2, correct? plus probability of A3 multiplied by probability of the defective basis A3 Right. Yes. plus Very good. probability of A4. Okay, so now just put the values and find the answer. Okay, so just substitute values A2. ये बॉक्स के अंदर ही ये वैल्यूज लिखे हैं तो वहां से ही बोल सकते हैं आप डायरेक्ट. बॉक्स में ही सारे वैल्यूज प्रेजेंट है.
यस टेल मी, न्यूमरेटर में क्या लिखना है बोलो। 20 upon 100. एक सेकंड है, एक सेकंड जस्ट। 20 upon 100, यस आगे। 4 by Into 4/100. ओके, डिनोमिनेटर का बोलो। 10/100 हाँ यस, into 5/100 वेरी गुड, plus 20 upon 100 यस वेरी गुड, into 4/100 यस बोलते जाओ, सही जा रहे हो। plus 30 upon 100 into 3/100 plus 40 upon 100 into 2/100. वेरी गुड, बस आगे तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। थ्रू आउट 100 तो कैंसिल हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, दैट इज 80, और डिनोमिनेटर में 50, 80, 90 प्लस 80, ये 40 है। फाइनली टोटल डिनोमिनेटर ऐड करके बताओ। 80 प्लस 80 160 प्लस 50 110 210 प्लस 90 300 ना। 300 sir. So 8 upon 30, 2 by 4 by 50 ना, I think so. Yes, 4 by 50. Sir, yes sir. Any doubt? No. Okay, good. So let's solve another question. Yes. Read properly this question and think about that. So what is our A1? Suffering from cancer. कैंसर कोई उसने डिजीज बोला है, डोंट वरी। A2 क्या है? यहाँ तक क्लियर है? A1 A2 का मतलब समझ गया? yes sir, Yes, ये sir. मतलब पॉजिटिव Positive फ्रॉम रिजल्ट टेस्ट, disease. टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, राइट? Yes, हाँ, अब वो टेस्ट किसका किया है वो मालूम नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ और बॉक्स के हिसाब से मुझे डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करना है। 2000, 98,000, राइट? पहले मुझे बताओ टोटल कितने हैं जो जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है? 2000। 2000, यहाँ तक क्लियर है? जिनको कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ है ऐसे कितने लोग हैं? 98,000। जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसके चांसेस कितने हैं? 95. जिनको 95 upon 100. जिनको डिटेक्ट नहीं हुआ है बट उनको भी पॉजिटिव आया है, ऐसे कितने लोग हैं? 5 upon 100, ये 5 upon 5% 100. मैंने क्यों लिखा समझा? बिकॉज उन्होंने 100% यहाँ नहीं लिखा, यहाँ 100 लिखा रहता तो यहाँ 95 की जगह 100 और यहाँ 0 आ जाता। Yes. अंडरस्टूड? yes Yes, sir, sir. यस, वेरी गुड। ओके,
यहां तक क्लियर हो गया फाइनली? नाउ व्हाट इज योर Yes, sir. क्वेश्चन? अब सपोज दैट क्वेश्चन क्या है वो छोड़ दो, अगर मैं पूछना चाहूं कि व्हाट इज द टोटल पॉजिटिव पीपल P of B, तो हाउ टू कैलकुलेट दिस? आप इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो ना, व्हाट इज द डिफेक्टिव आइटम्स? पीपल को आइटम समझो और जिनको डिजीज है पॉजिटिव को डिफेक्टिव समझ के आप इसका आंसर बताओ। हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ P of B? P of डिफेक्टिव बोलो, B का मतलब आप डिफेक्टिव समझ के ही चलो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या लिखूं मैं आगे? P of A1 P of A1 into P of into P of डिफेक्टिव फ्रॉम A1। अब इसको जरा सेंटेंस में आप बोलो, दैट इज बेटर। ये तो मैंने आपको जस्ट एक समझने के लिए बताया, बट इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? P of A1 क्या है? probability of Probability people who of- are suffering from cancer. वेरी गुड। एंड P of B by A1 क्या है? Probability of the Positive. test. हाँ, पॉजिटिव Positive इन test. टेस्ट फ्रॉम A1। People who are suffering A1 from A1 is what? People who is suffering from cancer। cancer. अंडरस्टूड? जो कैंसर से सफर कर रहे हैं उनका रिजल्ट पॉजिटिव है। व्हाट इज द चांसेस ऑफ दैट? दैट इज नोन एज P of B by A1। अंडरस्टूड व्हाट मीनिंग ऑफ P of B by A1? स्टूडेंट्स, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अगला क्या लिखेंगे? A2 and P of A2, सॉरी P upon A2। टेल मी P of A2 क्या है? Yeah, what is the meaning of P People of? who are not suffering from cancer. Yes, very good. And what is the meaning of P of B by A2? People who are not positive from the test. Test is positive for that people who are not suffering from disease. Understood? Okay. That is P of B by A2. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, once again, tell me what is the meaning of P of B by A1? Once again, tell me what is the P of B by A1? People who have Probability of the tested person who got positive from the test Test positive is positive. positive of that people who are suffering from cancer. And B by A2 means what? Test is positive of that people who are not suffering from cancer. Is it clear or not? Yes, sir. Yes. And what is the meaning of P of A1? The probability of that people who are suffering from cancer. And what is the P of A2? Probability of people who are not Suffering from cancer. Is it clear properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. तो Yes, sir. finally यहाँ पे जो P of B है, यानी कि जितने भी पॉजिटिव पीपल है वो सबका हम लोग यहाँ चांसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। बट ये जो P of B आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे भी पीपल हैं जो एक्चुअली में पॉजिटिव नहीं है, बट ड्यू टू मशीन की एरर के वजह से उनको पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है। राइट? इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ जो P of B कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल whose टेस्ट इज पॉजिटिव, ये आंसर एक्यूरेट नहीं है। इज इट क्लियर? Yes. यस। और हमें Yes, एक्यूरेट sir. कैलकुलेट करना, तो हमने फिलहाल तो इतना तो फिल्टर कर लिया ना। P of B निकालने का मतलब, ये मैं इसे B बना देता हूं, B मतलब दोनों में से थोड़ा थोड़ा मिल गया, इधर से भी कुछ पॉजिटिव वाले आ गए और इधर से भी कुछ पॉजिटिव वाले आ गए। बट मुझे कौन सा कैलकुलेट करना है? सिर्फ ये वाला पोर्शन। अंडरस्टूड और नॉट? Yes. ये डायग्राम से समझ में आ रहा है? क्योंकि 1000 में जो पॉजिटिव आए उन्हीं को मुझे फाइंड आउट करना है, जो 98 में 1000 में से पॉजिटिव आए वो मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब मुझे ये कैलकुलेट करने का मीनिंग क्या कैलकुलेट करना है? P of what? इसका नाम बॉक्स A1. इसका नाम बॉक्स A2 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है?
Okay, so finally you have to calculate A1 upon B because हमने according by using this formula total B calculate कर लिया. That means you know about B. B already आपके पास मालूम है मतलब knowing that means have given that. एंड आपको उस B के अंदर से A1 वाले कितने हैं वो कैलकुलेट करना है. So that means you have to calculate A1 upon B. This is your base theorem. Is it clear? Yes, sir. What is Yes, the sir. formula of P of A1 by B? Just tell me the formula also. I mean, tell me the formula of base theorem. अरे इतना 4 क्वेश्चन सॉल्व किया एटलीस्ट अब तो बताओ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेस थ्योरम. Probability of A1. हाँ यस. एक सेकंड जस्ट आई विल राइट हियर. ओके यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो आई लीव वन लाइन इन नेक्स्ट लाइन. यस, योर टारगेट इज A1 upon B. Is it clear? So that Yes, will be sir. yes. What is the formula? P of A1 into P of B upon A1 the whole divided by, tell me, P of Probability of B. B. और B already आपको यहाँ ऊपर वाले लाइन से मिल जाएगा, राइट? और फिर Yes. यहाँ पे Yes, sir. आई थिंक सो आपने समझ गया रहेगा इस पूरे क्वेश्चन को. All of you understand this question or not? Yes, sir. Okay. So tell me the calculation wala part. So P of A1 that is 2000 upon 1 lakh. 1 lakh into 95 upon 100. प्लस. बट इसको हम लोग यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे? बिकॉज अपना क्वेश्चन तो सेकंड पार्ट है, ये तो पूछा नहीं है, सेकंड पार्ट ही पूछा है. तो बेटर ये है कि मैं डायरेक्टली उसको उधर ही सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ. डबल कैलकुलेशन क्यों करेंगे? अच्छा ये कब कैलकुलेट करते हैं? जब क्वेश्चन में क्या ऐसा पूछा रहता है तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं. पी ऑफ बी का मीनिंग क्या है? P of B is what? Probability of Positive test. positive people. That's it. Is it clear? Came from which? ये जानने की जरूरत नहीं. ये सारे का सारे पॉजिटिव वाले हैं. अभी ये सब जो एक्चुअली कैंसर से सफरिंग वहां से सिलेक्ट हुए हैं या नॉन कैंसर वाले भी सिलेक्ट हुए हो मालूम नहीं. ये सबके सब पॉजिटिव वाले लोग हैं, राइट? Yes. यस. तो ये हमने कैलकुलेट, अगर क्वेश्चन पूछा रहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव पीपल पॉजिटिव इन कोविड और कैंसर, तो ये पूछा रहता था देन हम विल कैलकुलेट द पी ऑफ बी. बट ऐसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं, उसने तो एक्यूरेट रिजल्ट पूछा है. तो पहले हमने पॉजिटिव वाले कैलकुलेट कर लिया और उसमें से जो एक्यूरेट वाले वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं. सो दैट इज योर बेस थ्योरम. सो हियर डायरेक्टली यू राइट पी ऑफ बी का एक्सप्रेशन इन डिनोमिनेटर. सो नो नीड टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जस्ट राइट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. आई मीन 2000. आप लोगों को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. इधर लिखना है 95 by 100 प्लस 98,000 अपॉन 1 लाख. 1 लाख में 50 रहता है एंड दैट इज 5 by 100. न्यूमरेटर में क्या लिखना है? टेल मी. 2000 Upon 1 lakh. into. 95 by 100. इज इट क्लियर? सो फाइनली योर रिजल्ट यहाँ पे जो एक्यूरेट पॉजिटिव वाले हैं वही मिल जाएंगे. ओके, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? डिनोमिनेटर कट जाएगा, राइट? Yes. डिनोमिनेटर कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर. तो ऊपर 2000 into 95 हो जाएगा. 2000 into 95 एंड डिनोमिनेटर 2000 into 95 plus 98 into 5000. तो सब ऐड करके आप बताओ मुझे. चलो एक लाइन और यूज कर लेते हैं.
2000 into 95. 2000 into 95 plus 98,000 into 5. Yes, tell me the final answer. Just do it in the calculator. Simple calculator में भी हो सकता है. 19/68. 19/16. Okay. In percentage, 90/16 into 100. Then your answer will come in percentage. Yes, 19/16. No, this is not possible. This is wrong. Exactly wrong. 68, sir. 68. So percentage में कितना आया? 19/68 into 100 equal to 27.94. ठीक. Okay, understood this question properly. 27.9. Okay, ठीक है. No need to calculate in section also. Right here. 27.94, sir. Okay, very good. And now next question. So any doubt in this question? Hope so all of you understood this problem, right? Yes, sir. Okay. So now next question. Let's try to solve next question. Okay. So now next one, the probability that market going up when economy will not do well here not. That is 0.2. Already given in the question. Now what is your question? I mean, क्या find out करना है? Let's see. What is the probability that stock market will go up in next year? So that means your question is find P of U. So this is the total probability theorem. Tell me the value of this one. So first of all, well and going up when economy will do well, right? Yes. Yes. Plus this is once again not well, but once again market going up. U by W. U by W. Yes. The value of first one is 0.8 and U by W is what? What is the value? 0.7. 0.7 and plus P of W bar is 0.2 and P of U by W bar is again 0.2. So tell me the answer. That is 0.6 and that is 0.04. Finally is the 0.6. Na? Any doubt? No, sir. Okay. So this is your complete solution of this question. First of all, we will define the events. U is the event. The stock market will go in next year, and W is nothing but economy will do well in next year. W bar is economy will do not well in next year. P of W, that is a probability of that the economy will do well, that is 0.80. That is already given in the question here, directly given. And by using common sense, the W P of W bar, the probability that the economy will do not well, that is 1 minus 0.8, that is 0.2. Okay, this is not given in the question. हमने common sense से calculate किया है. After that, what is the probability when market is going up, when economy will do well, that is 0.7, and not well, then 0.2. Already given in the question. So finally, we will write here, that is P of U by W, probability that market going up when economy will do well, that is 0.7, already given in the question. And if not well, then answer will be 0.2. So, and your question is find the probability when market going up in next year. What is the chances of that? So this is the P of W U, and according to total probability theorem, this is your formula. Now here substitute all the values and calculate, then final answer is 0.60. Understood? Let's see another question.
Okay. Okay, so now let event H. H is nothing but what? High economic growth, right? Yes. Yes. And what is the probability of high economic growth? 0.3. 0.3. M is, yes, moderate. Economic growth. And what is the probability of that? 0.5. 0.5. Very good. Now L, Low low moderate. economic Low economic growth. growth. That is P of L. Answer is 0.2. 2. Okay, very good. Now next, the first line, and economics believe that the during period of high economic growth, Indian rupees appreciates. A for what? Here let A is the event. Indian rupees or currency, whatever. So P of H by A. What is the meaning of that? Tell me first of all meaning. Probability of high economic growth. If Probability that high economic just growth, if high, Indian rupees is appreciate. yes. Growth when Indian rupees is appreciate. okay. What is the answer of that? 0.7. 0.7. 0.7. Next value जो भी रहेगा, that is P of M by A, right? Yes, sir. Yes. So high की जगह यहाँ पे मैं सिर्फ moderate लिख देता हूँ. बाकी पूरा sentence same और यहाँ पे सब कुछ as it is, low and पूरा sentence same. This is P of L by A, right? Yes, sir. Now tell me the answer of first part and second part. Read one question and then tell me answer. Yes. In a period of moderate economic growth, if it appreciate with probability is 0.4. तो moderate के लिए 0.4 है and low के लिए 0.2 है. Okay. Now first part of your question is what? P of H by A. What is the formula? First of all, you have to calculate P of A because that is a given, and then your first part. So what is the formula of P of appreciate Indian currency? Then P of, yes, tell me. P of H. P of H in H upon A. H by A. H by A. PM. Yes. Tell me the value. First part का आंसर कितना था? तीनों का आंसर 0.35 और 2, राइट? अच्छा भाई यहाँ चीज एक नोटिस कर रहे हो, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 101 आएगा, समझ रहे हैं? बट ये तीनों को ऐड करोगे तो नो नीड टू कम 1, इसलिए बोला था इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कर सकते थे. सपोज दैट मुझे हाई और मॉडरेट का मालूम होता तो लो कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस 0.3 और 0.5 करते तो 0.2 आ जाता, ठीक है? बट इसमें अगर 0.7 और 0.4 मालूम है तो L के लिए, L by A के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते,
बिकॉज यहाँ ऐड करके 1 आता ही नहीं। वैसे भी आप देखो तीनों ऐड करके 1 आ रहा है क्या इधर? 0.7, 0.4 एंड 0.2। नहीं सर 13 आ कंडीशन में डायरेक्टली ऐड करके 1 नहीं आता है, बट नॉर्मल इवेंट में सबका एडिशन 1, इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। अंडरस्टूड? चलेगा। 0.3, 5 एंड 2 याद रखो आप। 0.3 और इसका आंसर 0.7, राइट? 0.5, 0.4, 0.2 and again 0.2. 7 into through 21, 20.04, 41, 44 ना 45. Is it correct? Check करो। यस सर Yes, sir. 0.2 है। Okay, now first part of your question is that is first part P of H upon A या कि A by H? गिवन A है ना, A गिवन है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये गिवन हो गया ना आपके लिए, तो गिवन हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये तो क्लियर हो गया, इसीलिए बोलो P of A into P of A by H डिवाइड बाई, करेक्ट है? P of A। ये कुछ गलत कर दिया मैंने, यहाँ बेस थ्योरम ही गलत लिख दिया। न्यूमरेटर गलत लिखा है। बोलो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग ऊपर क्या आएगा? P of H P of H into to P of H upon A P of A by H, राइट? P of A कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने। कुछ कंफ्यूजन हो गया लगता है ना? वेट, the probability the Indian rupees appreciate with probability is 0.7, यानी P of A equal to 0.7 if high economic growth is done, that is A by H. Understood this sentence or not? yes sir Yes, तो यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक किया है, इसको हम लोग पूरा चेंज करेंगे। That is your mistake from our side. This is not A by H, that is sorry H by A, that is A by H. पूरा रॉन्ग हुआ है, इसको चेंज कर लेंगे हम लोग। Do you understand or not? yes करेक्शन yes आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करेक्शन में कुछ डाउट है? नहीं सर इसका प्रोबेबिलिटी दिया रहता है वो ऊपर लिखते हैं, इतना तो क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is given, then P of A by B नोटेशन में आता है। वहां पे अप्रिशिएट का उन्होंने प्रोबेबिलिटी दिया है 0.7। कंडीशन इज इंडियन इकोनॉमीज ग्रोथ, हमने उसको उल्टा रीड करके गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो करेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? वन सेकेंड, मैंने रफ कर दिया, वापस बताओ। A by H A by H, and what is the meaning of that? Indian probability that Indian rupees appreciate if high Yes. economic growth. yes, if से बेटर है for high economic growth, right? Yes sir बस तो इसमें ही हम लोग को ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखना है। एंड इधर हाई की जगह मुझे क्या लिखना है? moderate मॉडरेट लिखना है, करेक्ट। और इधर लो लिखना है। हाँ, यस टेल मी। A by H ना, A by M, and here A by L। वैसे भी ये फॉर्मूला भी आप लोगों को गलत दिख रहा था ना, यहाँ पे देख रहे हो फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग लिखते हैं P of D इक्वल टू, तो P of A इंटू P of D by A लिखते हैं, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जगह पे होता है कि नहीं? याद आ रहा है आपको टोटल प्रोबेबिलिटी से? यहाँ पे देखो H और H आजू बाजू है, इसका मतलब ये तो क्लियर गलत था। यहाँ पे भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए था कि हमने मिस्टेक ली।
Okay, so tell me the proper formula. Bolo. PH H P of A by H. P by अभी H. देखो फिट भी हो रहा है इधर H और इधर H, right ना? P of Yes, M, yes. then P of A by M. P of L, then P of A by L. And values तो हमने proper substitute किया है. Values में कुछ mistake नहीं. चलो अब next में आते हैं. तो हम लोग को फर्स्ट पार्ट में पूछा है H by A. अभी ये परफेक्ट है जिसका आंसर हम लोग प्रॉपर नहीं निकाल पा रहे थे. 0.3 into 0.7 divided by what? 0.45 ना? 0.45. 2/45. सेकेंड पार्ट का आंसर बोलो. P of M by A. तो P of M, P of A by M divided by P of A. Is it correct? Yes, sir. Divide by P by A. Yes. तो M का वैल्यू कितना है? 0.5 into 0.4 divided by 0.45. 20 divided by 45, right? And C part is follow L upon A, P of L into P of A by L, P of A. 0.2, 0.2 divided by 0.45. 4 upon 45. Any doubt? No, sir. Okay, so that's all for today. So in next lecture, we will start the new module. We have completed two modules, module 1 and module 2. And I will upload one assignment for that module today. But last date of submission of assignment 2 is next Saturday. Yani coming Shanivar. After 7 days. Okay? मैं आज upload कर दूँगा. Don't worry. Okay, so that's all for today. We will meet in next lecture. Thank you very much.